लिखा है मैं निसंतान हूं। निसंतान व्यक्ति का नाती कैसे होगा? दिस इज हाउ इट थिंग्स आर रिटन इन भिंड। जब वो कहेंगे कि रिश्ते में नाती लगता है, मतलब नाती नहीं है वो। ये भी लिख रहा है ना, मैं निसंतान हूं। दैट मींस यू आर नॉट ब्लड रिलेटिव। ये हो सकता है भाई का नाती हो, बहन का नाती हो, कजिन का नाती हो सकता है, साले का नाती हो सकता है। साले का नाती हो, ये तो अविवाहित है, रिश्ते में ही। ये तो अनमैरिड है। लेकिन वसीयत तो की है मतलब। हाँ, वसीयत की है, ठीक है। सो हाउ दे वुड गेट नॉलेज ऑफ वसीयत अनलेस यू ब्रिंग ऑन रिकॉर्ड दी वसीयत? ही वॉज चाइल्डलेस, ही डिड नॉट हैव एनी क्लास 1 ईयर्स, ही वॉज अनमैरिड, चाइल्डलेस। अभी तो अबेटमेंट की बात हो रही है। बट मतलब अबेटमेंट की हो रही, लेकिन डिले मतलब ओनली ऑन द कितना डिले है? मतलब 20 महीने बाद इन्होंने एप्लीकेशन लगाई। हाँ, और एक ही लगाई है एप्लीकेशन, उसमें आप ऑब्जेक्टर बन के आए। मतलब हम तो हर उसमें हम इसको कर रहे थे। मतलब दूसरा जो केस है, मतलब लिंक केस, उसमें तो हम उसमें तो मतलब कोई वसीयत की भी बात नहीं। ये तो 22/10 में आएगा, ये 22/3 22/4 में नहीं आएगा। अगर आप विल होल्डर हैं तो 22/10 में आएंगे आप। Then you have to move under 2210. They will move under 22(4)(a). You will move under 2210. This will be the procedure. How it can be said to be abated? Because मतलब every date मतलब I was appeared मतलब they have sought time for the application मतलब They moved an application कि उनके एलास का नाम बताया जाए, नहीं बताया गया एलास का नाम। बताया गया मतलब उसके बाद how they will admit the will? You are holder of the will. You have to come out with the will. इसमें हमारे फेवर में विल है। आपने कोई एप्लीकेशन फाइल की कि हमारे फेवर में विल है? यस मतलब वहां पे हमने एप्लीकेशन दी मतलब देयर आफ्टर मतलब उन्होंने ऑर्डर एग्जीक्यूट भी कर दिया। मतलब हमारा नाम बाद में इन्होंने चढ़ा भी दिया। ये 22 की जो तभी तो इनको मालूम पड़ा कि आप भी हैं। नहीं मतलब उसके पहले जब ये अपील डिसमिस हुई, इसके बाद हमने दिया मतलब। अच्छा, 151 की एप्लीकेशन में देखिए कंटेंट्स क्या है। 16 and 17. Number 16 and 17, page number 41. आप कनेक्टेड केस में भी आ रहे हैं क्या? कनेक्टेड केस में तो मतलब सीधे हमारे ही नाम से मतलब उसके बाद हम कनेक्टेड को बाद में देखेंगे जी। ये अवेट तो नहीं होगी अपील जी। आप 22/10 में जाइए, वहां आपको लिबर्टी देते हैं। यू फाइल 2210 देयर। में लिखिए बाय वे ऑफ दिस पिटीशन चैलेंजेस मेड टू द ऑर्डर डेटेड 8/3/2022 नहीं 19/5/2025 passed by the MP State Corporate Tribunal in SA 26 of 2022, whereby the tribunal has rejected the appeal of the present petitioner by holding the same as abated. Next, the appeal was filed by the petitioner against Narayan Prasad Mishra, who expired on one objection is that मतलब he is not authority to file this appeal MP matter because the only administrator can file the MP matter. ये कौन है? मैनेजर है ये he is the manager matter. I have filed the document matter along with that. Only the administrator can file this. Page number 12 matter. I'm sorry to disturb matter. Manager has no rights. Ask me here वही अन्यथा की स्थिति में संस्था के हितों के विपरीत आदेश होने पर संबंधित प्रशासकों का उत्तरदायित्व। कहाँ लिखा है? पेज नंबर 12 ऑफ रिप्लाई। No authority letter has been given to him. No approval is there, madam. Authority He letter directly filed this. is there, but this is not recorded. Even the administrator has no knowledge about this, madam. Any authority by the administrator? Lordship, authority letter is there, is lordship, but not in record. बताइए क्या है? पैरा नंबर 2 है lordship. ताकि हित के विपरीत निर्णय है ना, प्रशासक का उत्तरदायित्व है। प्रशासक नहीं मतलब इसके मैं काइंडली से पेज नंबर 15 मतलब उन्होंने इन्फॉर्म किया डिप्टी रजिस्ट्रार को मतलब कि हमने ये नाम कर दिया। जब प्रशासक को यदि मालूम था मतलब कि हम अपील फाइल कर रहे हैं तो प्रशासक आपसे मिले हुए हैं क्या? नहीं मतलब इन्होंने हमने एप्लीकेशन दी। प्रशासक काम लिख देते हैं कि प्रशासक आपसे मिले हुए हैं, उनको चेंज किया जाए। नहीं, हमने तो मतलब डिप्टी रजिस्ट्रार डिप्टी कमिश्नर कोऑपरेटिव को लेटर दिया मतलब। कितना इलीगल ऑर्डर किया है ट्रिब्यूनल ने। प्रशासक अगर उसका बिल्कुल हैप्पीली पालन कर रहे हैं, देन प्रशासक इज हैंड इन ग्लव्स विद यू।
My lord, इन्हीं Would we turn a blind eye? My lord, my submission only that, my lord, after this order, my lord, I have given the application to, then the deputy commissioner has directed to administrator, my lord, to take action. And then he has given the letter, page number 15, my lord, the name has been endorsed, my lord. And thereafter this appeal has been filed, my lord, on affidavit of manager. My तो only, डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय कह रहे हैं नाम जोड़ के सूचित करें। ये जी my lord, ये हमारी हमने एप्लीकेशन दी, my lord, इस ऑर्डर के बाद। ठीक है, तो इसके बाद ये जब कॉर्पोरेट ट्रिब्यूनल ने कह दिया कोई वारिस मालूम नहीं है, तो डीआर साहब ने कैसे कह दिया वारिस है? डीआर साहब ने विल प्रूव हमारा मान ली। नहीं- वारिस का नाम नहीं चढ़ा है, my lord। आपका चढ़ा है? डिसीज पे ही चढ़ा है। अभी तो वारिस का नाम ही आया ही नहीं, my lord। हमने ये बताइए, लिखा- आवेदकगण श्री राधारमण शर्मा द्वारा, अब केस तो हम ही कंटेस्ट कर रहे थे, my lord, लेकिन नाम जो चढ़ा नारायण प्रसाद ठीक मिश्रा। है, विल डील विद दैट। कहाँ पे थे? During pendency of the appeal, Nayan Prasad Mishra died on 30/3/2023. An intimation of his death was given before the tribunal on 10/8/2023. Point. The petitioner filed an application before the tribunal on 25/8. Counsel, who was earlier appearing for the deceased respondent Narayan Prasad Mishra, may intimate the names of legal representatives of Narayan Prasad Mishra, because the petitioner society could not get knowledge of the legal representatives of Narayan Prasad Mishra. Point. The said application remained pending before the tribunal, and no names of legal representatives were disclosed by counsel who was earlier appearing for Narayan Prasad Mishra. Point. Thereafter, the petitioner filed another application on 19/5/2025 before the tribunal that one Radha Raman Sharma has filed a copy of will to before the society, intimating that he has succeeded on the estate of Narayan Prasad Mishra on the basis of will, and the society does not believe the said will, and therefore appropriate orders be passed by issuing notices to Radharaman Sharma, so that the tribunal can be apprised of the correct facts, that whether Radharaman Sharma has succeeded the estate by way of will. Point. Another application was filed by the petitioner before the tribunal under Order 22 Rule 4 capital A CPC, that since there are no known TNW and known legal heirs of Narayan Prasad Mishra, therefore the court should proceed under Order 22 Rule 4 capital A CPC, which provides a procedure where no legal representatives of the deceased party are there. Next, the tribunal, by the impugned order dated 19/5/2025, has refused to issue notice to Radharaman Sharma, but has held the appeal to have been abated because no action has been taken for impleadment of legal representatives of deceased respondent Narayan Prasad Mishra. Next, the counsel for the respondent, while opposing the petition, has argued that subsequently the under orders of the deputy registrar, the name of petitioner has been entered in the society as member in place of Narayan Prasad Mishra, and therefore the petitioner cannot challenge the order of the tribunal. Point. Next, upon hearing the rival parties and on perusal of the report, it is seen that the deceased party Narayan Prasad Mishra expired on 30/3/2023, and the counsel, though intimated the date and fact of death of his client on 10/8/2023, but did not intimate name of any legal representative. Point. An application was filed by the petitioner before the tribunal
to that effect on 25/1/2024, but the counsel, though he continued to appear, but did not intimate name of the legal representative. Point. Even before this court, it is being disclosed that no class 1 legal representative of deceased Narayan Prasad Mishra exists. Point. Next, when the present respondent Radha Raman Sharma filed an application along with copy of will before the society, then the society moved an application before the tribunal to issue notice to Radha Raman Sharma so as to arrive at proper conclusion, but the tribunal in its own wisdom refused to issue any notice to Radha Raman Sharma and held the appeal to be abated. Point. Next, once the tribunal had come to a conclusion that notices need not be issued to Radha Raman Sharma, then it was clear that there are no known legal representatives of the party and the tribunal ought to have proceeded under Order 22 Rule 4 capital A, for which the application was already on record before the tribunal. Next, this court has gone through the alleged will executed by Narayan Prasad Mishra in favor of Radha Raman Sharma, and as per the said will, it is clearly mentioned therein that Narayan Prasad Sharma was a bachelor and issueless. Point. He has executed will. He has executed the alleged will in favor of Radha Raman Sharma, who is his grandson in some relation, but he himself was issueless and unmarried. Point. Therefore, it is clear that the deceased did not leave behind any class 1 legal representative, and the only person who was projecting himself on the basis of will, and the society and the petitioner society in all fairness applied before the tribunal to issue notice to the holder of will